Of this seminar regarding career guidance and counseling. Before we proceed this session, just would like to inform you what is the motto of organizing this seminar. It has been observed that most of you guys, as you are all our students, must be getting coaching from an XYZ institute. You have must notice that आप लोग जो हैं generally all institutes में देखते हैं, जैसे out of ओखला का example है, I don't want to name any other institute, वहाँ पे आपको coaching के अलावा भी extra दिया जाता है regarding how to shape your career, regarding personality development. Because unless you don't have personality, you cannot develop your career. So the motto of organizing this seminar in Okhla is that आपका ओखला में ऐसा नहीं हुआ है, and we want कि at least ओखला में ये चीज़ की जाए ताकि जो यंग जनरेशन है, जो यंग ब्लड है आपका, उनको एक प्रॉपर करियर गाइडेंस मिल सके, किस तरह उनको अपना करियर शेप में लाना है और अपनी जिंदगी में एक्सेल कर सके. This is the motto of organizing this seminar in Okhla. And I really thank to you कि आप लोग इस सेमिनार का पार्ट हैं. जैसे you must have seen the posters regarding this seminar. They are the three speakers. Unfortunately, is that Mr. Sham Sodal and Mohammed Insar is not able to attend today's seminar because they are stuck in jam. So hopefully, if the further proceedings होती हैं, अगर वो आते हैं, definitely they will be part of that. As of now, Mr. Alam is now over here with us. So before we proceed, just want to inform regarding Mr. Alam. Mr. S. Alam is from Bangalore. He has done PhD. He is PhD scholar, and moreover now he is part of Service coaching. And Mr. Alam is also ex-faculty of Bright Academy, Bangalore. And Bright Academy is very good. It is one of the best academy in Bangalore now. So he is the ex-faculty over there. Mr. Alam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. It's very heartful to see you here. And when I come here, I have seen in the posters there the line is written there. It is first time in Okhla. Maybe once in a blue moon, the things have been done here, the kind of program, the kind of guidance. What you saw here is our dedication. And I'm very much thankful for the organization and the management for their support, for their help, for organizing this kind of program. And you must have heard that they were the agents of the change. This kind of change and the approach has been done from here, and I hope to see this kind of program will be done in the future also, which can help us ignite our wings. That's why I have written here is an ignition to the wings. Just take a pause here. After the azan, we will continue. Now we should start the program, and first of all, let us talk about the dream. Very famous quotation by our former president, Dr. Kalam, has said, "Dream is not that which you see while sleeping; it is something that doesn't let you sleep." I would like to ask you, my brothers and friends over here, what's your dream? No one. Is there anyone who dreamed to be an engineer? Yeah, few hands has been raised. Is there anyone who dreamed to be a doctor? One. Is there anyone who dreamed to be an IAS officer? Fine. That's why we are here. Is there any problem to you if I speak in English, or should I mix the words with Hindi and English both? No problem? Thank you. But still we mix the things, huh? So let's share our dreams. It has been said that dream transform into clouds and clouds transform into action. दोस्तों, जब तक हम
ड्रीम करेंगे नहीं, जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, तब तक हम कुछ बन नहीं सकते। हाँ, सपने वो हैं जिसको जब तक आप पूरा नहीं कर देते आपको नींद नहीं आती। सपने वो हैं जब तक आप उस काम को पूरा नहीं कर देते आपको नींद नहीं आती। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, if someone saw the dream to become an IAS officer, he has done his 100% efforts into that. Day and night he is struggling for the studies. Day and night he is struggling to make the dream fulfill. सालों साल लोग मेहनत करते हैं और उसके बाद जब यूपीएससी के एग्जामिनेशन आता है, एग्जाम के बाद जब वो फ्लाइंग कलर्स से पास होते हैं तो उनको सुकून आता है। Have you ever seen the interviews of Dr. Shah Faisal? He was the IAS topper. He was the first ranker in the UPSC examination for the civil services. Have you known him? No. Exactly. You are aspiring to be a doctor, right? Have you known who was the topper of this year AIPMB? No. It is Tejaswin Jha. So studying hard and hard, but not only studying, but I am also doing the recreational work, like playing football, like playing games, kind of thing, but also equally focused on the studies. So hard work का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जो भी ख्वाब देख रहे हैं, जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हैं, उसको फुलफिल करने के लिए हार्ड वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सपने देखेंगे नहीं, आप कोई चीज कर नहीं पाएंगे। ये कौम जो है वो ख्वाब देखने से ही आगे बढ़ेगी, और ख्वाब जब आप देखेंगे तो फिर जो है आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आज हम क्यों पीछे हैं? लोग शिकायत करते हैं कि ये कौम बहुत पीछे रह गई, ये कौम बहुत पीछे। क्यों हम पीछे हैं? क्योंकि हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे ले आए, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। एक छोटी सी नौकरी ले लेनी और अपनी जिंदगी गुजर बसर करनी नहीं। ये वही कौम है दोस्तों जिन्होंने दुनिया को बड़े बड़े साइंटिस्ट किए, दुनिया को बड़े बड़े डॉक्टर दिए। आपको पता है केमिस्ट्री का जो है सबसे बड़े, who was the first great scholar of the chemistry? He was Zabir ibn Hayyan. In the 12th century, Zabir ibn Hayyan was the first scientist who have done the experimental laboratory work in the chemistry. You know, you have seen the periodic table by the name of the Mendeleev. In your schools, you have seen that. Who have invented that? Mendeleev was not credited for that, but actually it has been done by the Zabir ibn Hayyan in the 1280. 800 years ago. He was the first experimental scientist. He was a Muslim. You know, Al-Tusi was a great physicist. Earlier, the world think that, as a Greek philosophy said, that Earth is a stationary body while sun revolves around us. But today science has said कि नहीं, अर्थ जो है वो मूविंग बॉडी है और सन एक स्टेशनरी बॉडी है। ये कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? He was Al-Tusi and he was a Muslim scientist. उसने ये कॉन्सेप्ट दिया after 40 long years of his research. Then he come to my point that no, sun is a stationary body while earth is a moving body. तो Muslim scientists ने बड़े-बड़े, even Ibn Sina was the doctor. He was a medical doctor, and at that time, when there is a golden era of the Muslims from the 880 to 1480, Ibn Sina was a great doctor. In Iraq was the world medical center at that time. The kind of surgery he have introduced in this medical field was very much unique and still has been practiced. And that kind of
administration. You know, the great administrator was Hazrat Umar Farooq. How great administrator he was? Even when Gandhiji has said during the freedom movement of the India, and when India got freedom from the Britishers, he says that I do not have better example than Umar Farooq to be an administrator. And I think that if Umar Farooq was present here at this time, he is a great administrator of the India. He has given the example of the Umar Farooq. And he was a scholar. So in the field of the administration, in the field of the medicine, in the field of science, in the field of research, in the field of the engineering, Muslims have done a lot. And they were the trendsetters. They were the milestones. You see, what are the conditions for us today? Because we can't dream. हम ख्वाब नहीं देखते कुछ करने के लिए. हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं. इसलिए ख्वाब देखते कि अगर हमने कोई चीज डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है, तो हम उस तब तक चैन नहीं लेंगे. We will not stop ourselves until we fulfill our dream. ये में क्या है? अब हम बात करते हैं एजुकेशन फिलॉसफी की. एजुकेशन हम क्यों हासिल करते हैं? हम तालीम की बात करते हैं. आपको पता है कुरान ने जो है हमें सबसे पहले वो बात सिखाई है, इक़रा, पढ़, तालीम हासिल करें. तो even from the Muslims philosophy, the education comes first. Education comes first. But we are still lacking it. हम लोग उसमें पीछे हैं. You know, do you know him? He is Allama Iqbal, the great philosopher of Islam at this modern time. He is a great poet. He was a great freedom fighter also. What he said, why we acquire the education? What is the need of acquiring the education? And a very famous line has been written by him, that is, make it my duty to serve the poor and needy, to be a source of comfort to the weak and elderly. आप समझे क्या कह रहे हैं? कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसे कमाएं. एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको लग्जरीज हासिल हो जाए. एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप शोहरत कमाएं, बल्कि एजुकेशन इसलिए लेना है कि अपनी जिम्मेदारी समझनी है गरीबों की और नीडी पीपल की, जिनकी जरूरत है, जो लोग डाउन ट्रोडन हैं, जो सोसाइटी में जो लोग अभी तक उनको मकान नहीं मिला, जो लोग एक लिविंग के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, उनकी मदद के लिए और उनके कंफर्ट के लिए. किनके कंफर्ट के लिए? जो लोग कमज़ोर हैं, इस समाज के गरीब तबके, इस समाज के कमज़ोर तबके और बूढ़े, उनके लिए हम कंफर्ट का सोर्स बन जाएं. इसलिए हम एजुकेशन हासिल करना. जब आप एजुकेशन हासिल करेंगे, आप कुछ बनेंगे अपने करियर में. जब आप कुछ बनेंगे तो आपके पास कुछ पावर आएगी, चीजें आएंगी, तो आप उससे लोगों की मदद कर सकते हैं. ये कौम तो ऐसे ही आगे बढ़ेगा. कैसे बढ़ेगा? ये इसलिए आज के यंगस्टर्स, जो मुस्लिम यंगस्टर्स हैं, उस पर बहुत डिपेंडेंट है कि ये कौम कैसे आगे बढ़े. बिकॉज यू आर द फ्यूचर, राइट? बिकॉज यू आर द फ्यूचर. इसलिए आप एजुकेशन हासिल करें. ये लाइन आपके लिए इसलिए कहता है. और अल्लामा इकबाल एक बात और कहते हैं, द ग्लोरी ऑफ मैन मेड ऑफ क्ले लाइज इन हिज एवर फ्रेश एक्टिविटीज. यू नो द वर्ड खुदी, कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे कि बता दे. खुदी, द सेल्फ रिस्पेक्ट, द सेल्फ प्राइड ऑफ ए मैन
has been kept in this ever fresh activities. कुछ नया करने की जुनून, कुछ नया करने की ख्वाहिश, यही तो है। आप हमेशा पुराने ढर्रे पे नहीं चल सकते। इसलिए अल्लामा इकबाल साहब इस बात को नौजवानों, ये बात नौजवानों के लिए, इन नौजवानों के लिए लाना चाहते हैं कि आप कुछ नया करें अपनी जिंदगी में, कुछ ऐसा करें जो आपका अपना ओरिजिनल हो, जो आपका अपना ओरिजिनल हो। जैसे पहले लोगों ने किया, उन्होंने किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया। सपोज दैट हम एग्जांपल देते हैं, आप इंडिया में, यू नो, नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, यू हैव सीन द फेसबुक, यू नो, फेसबुक के इन्वेंशन किसने किया? उसको किसने शुरुआत की? मार्क ज़करबर्ग। इससे पहले सोशल मीडिया कभी इतना रिवॉल्यूशनाइज नहीं हुआ था जितना फेसबुक की इन्वेंशन के बाद हुआ। तो ज़करबर्ग ने क्या किया? कुछ ओरिजिनल किया, कुछ नया किया, उसको आगे बढ़ाया। तो आज कितनी रिवॉल्यूशन, इवन कि आप देखते हैं इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, जितनी भी हैपनिंग्स पूरी दुनिया में हो रही है, सारी चीजें कवर की जा रही है सोशल मीडिया के थ्रू। तो कुछ नया लेकर के आए, उसके भाई कई पहलू हों, अच्छे पहलू भी होंगे, बुरे पहलू भी होंगे, लेकिन कुछ ओरिजिनल किया। इसी तरह इकबाल साहब का कहना है कि आप कुछ नया करें जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट हो, खुद ही हो उसमें। और इसी तरह द मून एंड द स्टार्स डू व्हाट दे हैव ऑलवेज बीन डूइंग। कौन है मून एंड स्टार्स? इस कौम के मून एंड स्टार्स आप, द यंगस्टर्स इज द मून एंड स्टार्स ऑफ दिस कम्युनिटी। और जिस तरह चांद और सितारे अपना काम करते हैं, जिसके लिए उनका इंतखाब किया गया, चांद और सितारे क्या काम करते हैं? चांद, you have seen that people are talking like you are like a star. चांद और सितारे आसमान को जगमगाते हैं, आसमान को रोशनी देते। तो इसी तरह हमारा इंतखाब, हमारा सिलेक्शन जो किया गया है, वो कुछ ओरिजिनल, कुछ बड़ा, कुछ सिग्निफिकेंट कौम के लिए, सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए करने के लिए भेजा गया। इसलिए अल्लाह कहते हैं कि आपका इंतखाब किया गया है ठीक उसी तरह जिस तरह चांद और सूरज का इंतखाब यानी सिलेक्शन किया गया है आसमान को रोशनी देने के लिए, आपको पूरी दुनिया को रोशन करने के लिए इंतखाब किया गया है। फिर उसके बाद कहते हैं will there remain any luster in the sun if it grows indifferently to its rays? क्या सूरज में वो चमक रह पाएगी अगर वो अपने रेस के अलहदा यानी रेस से डिफरेंट वो ग्रो करे? नहीं। इसी तरह क्योंकि सूरज की चमक जो है उसके रेस के थ्रू है, यू नो, किरण, रेस, सूरज की चमक उसके रेस की वजह से है। उसी तरह हमारी चमक जो है ना, हमारी चमक जो है वो इस कौम की चमक जो है, वो इस यंगस्टर्स की वजह से। जब तक यंगस्टर्स शाइन नहीं करेंगे और यंगस्टर्स के साथ ये कौम नहीं चलेगी, यानी कह सकते हैं कि यंगस्टर्स इस कौम को साथ लेकर नहीं चलेंगे, ये कौम नहीं चमकेगी। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरज की चमक उसके रेस के बगैर नहीं हो सकती, अगर उसके रेस से हट के वो चल रहा हो तो सूरज में चमक नहीं आएगी। इसी तरह ये यंगस्टर्स जो है वो एक रेस है इस कौम के लिए, समझिए। अब आप बताइए, who is this great patron of the Indian education system? Do you know him? Very, very thank you. At least you recognize him. He is Maulana Abdul Kalam Azad, and famously known as the Maulana Azad. He was a great freedom fighter. You know who was the first education minister of the India? Yeah, this is Maulana Abdul Kalam Azad. He was the first education minister of the India, and he was a Muslim. हम एजुकेशन की बात करते हैं, आप IITs के बारे में सुना है आपने,
the UGC, University Grants Commission, for higher studies, for the study of the PhD and the MPhil, there is a University Grants Commission, UGC. Have you heard that? He has supported the idea, he has supported the establishment of the education and that UGC.